हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू CivTech सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इमरान अजीज है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अनदर इम्पोर्टेंट एंड एक्साइटिंग टॉपिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग विच इज इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे और फिर हम बढ़ते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जानिब, जहां पे हम आज फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए गेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगी। लेट मी शेयर माई स्क्रीन और मीनवाइल आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इरिगेशन इंजीनियरिंग SSC JE MCQs सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 1 से लेकर 10 तक और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो इंट्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियली सप्लाइंग वाटर टू सॉइल फॉर रेजिंग क्रॉप्स इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने नेचुरल तरीके से नहीं बल्कि आर्टिफिशियली कैनाल सिस्टम के जरिए और इरिगेशन सिस्टम के जरिए पानी जो क्रॉप्स हैं या फसलें हैं उन तक पहुंचाना होता है और उस पानी से आपकी फसलें सैराब होती हैं। तो इस सिस्टम को, इसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कैनाल हेडवर्क्स विच इज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ रिवर, बैराज वगैरह, और उसके बाद रेगुलेटर्स, कैनाल्स और फर्दर वाटर कोर्सेस तक। ये तमाम सिस्टम को इरिगेशन सिस्टम कहा जाता है और इस प्रोसेस को जिसके जरिए ये पानी आपकी फसलों तक पहुंचता है इसको कहा जाता है इरिगेशन। इट इज प्रैक्टिकली अ साइंस ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग एन एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक इरिगेशन सिस्टम। इट इंक्लूड्स the engineering of controlling and harnessing the various natural sources of water by the construction of dams, canals and finally distributing the water to agriculture field। इसमें ये तमाम कंपोनेंट्स आ जाते हैं, डैम्स, कैनाल्स, बैराजेस और फाइनली आपने जो नेटवर्क अपने फील्ड्स तक पहुंचाना है जिनके जरिए पानी वहां पहुंचता है, तो ये सारा इरिगेशन सिस्टम कहलाता है। इरिगेशन क्यों जरूरी है? इरिगेशन इज नेसेसरी इन एन एरिया वेयर देयर इज एन insufficient amount of rainfall leading to water shortage। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं और वहां पे पानी का शॉर्टफॉल होता है, नेचुरल वाटर सोर्सेज नहीं होते और आपने क्रॉप्स कल्टीवेट करनी है, एग्रीकल्चरल एरिया है, सो ऐसे एरिया में इरिगेशन की जरूरत होती है। वेयर कमर्शियल क्रॉप्स रिक्वायर मोर वाटर, जहाँ पे कमर्शियल क्रॉप्स लाइक वीट, शुगर केन एटसेट्रा, या आपकी कपास वगैरह की जो फसल है, कमर्शियल क्रॉप्स हैं या कैश क्रॉप्स हैं, उनको पानी की जरूरत होती है। वेयर द रेनफॉल इज नॉन यूनिफॉर्म एंड वेयर देयर इज अ कंट्रोल्ड वाटर सप्लाई, तो जहाँ पे बारिशें कम हो ऐसे एरियाज में भी इरिगेशन की जरूरत होती है। द इरिगेशन वाटर इज सेड टू बी अनसेटिस्फैक्टरी if it contains chemical toxic to plants or to persons using plants as food। so ऐसा पानी जिसमें केमिकल टॉक्सिक्स शामिल हो, इंडस्ट्रीज वगैरह से आने वाला वेस्ट शामिल हो, तो वो पानी आपके एग्रीकल्चर फील्ड्स के लिए और इरिगेशन के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली आपने वो प्लांट्स या वेजिटेबल्स वगैरह इंसान ने यूज करनी होती हैं और लोगों ने यूज करनी होती हैं। सो इसलिए ऐसे पानी से अवॉइड करना चाहिए। केमिकल्स विच रिएक्ट्स विद द सॉइल to produce unsatisfactory moisture content or characteristics। तो ऐसा पानी जिसमें कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट या केमिकल्स शामिल हो और वो अल्टीमेटली कोई अनसेटिस्फैक्टरी मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा कर रहा हो। बैक्टीरिया इंजरियस टू पर्संस और एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स इरिगेटेड विद वाटर। तो ऐसा बैक्टीरिया जो इंसानों के लिए या एनिमल्स के लिए खतरनाक हो और वो एनिमल्स जो प्लांट्स को या क्रॉप्स को खाते हैं जिसमें अल्टीमेटली आपने इरिगेटेड वाटर डाला है या उनसे उस प्लांट्स को आपने उगाया है। और ऐसे पानी के अंदर अगर बैक्टीरिया शामिल होगा तो अल्टीमेटली आपकी जो क्रॉप्स हैं उसके अंदर भी उसके असरात जाएंगे और फिर अल्टीमेटली एनिमल्स में जाएंगे और वहां से गोश्त या दूध के जरिए इंसानों तक मुंतकिल होंगे। सो टॉक्सिक वाटर को अवॉइड करें, इरिगेशन वाटर अनसेटिस्फैक्टरी नहीं होना चाहिए। फिर हैं कुछ टाइप्स ऑफ इरिगेशन। द इरिगेशन में बी डिवाइडेड मेनली इनटू two types। Number 1 is lift irrigation and number 2 is surface irrigation or flow irrigation। So mainly दो मेन कैटेगरीज हैं इरिगेशन की। एक लिफ्टिंग के जरिए आपने हायर एलिवेटेड एरियाज के अंदर पानी पहुंचाना होता है या जहां पे हेड ज्यादा हो और आपने लोअर एरिया से पानी लेके जाना है, तो उसको कहा जाता है लिफ्ट इरिगेशन। और सरफेस इरिगेशन जो ग्रेविटी फ्लो के साथ पानी आता है तो उसको सरफेस इरिगेशन कहा जाता है। द मेथड ऑफ इरिगेटिंग द एग्रीकल्चरल लैंड बाय लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द अवेलेबल वाटर सोर्स एट अ लोअर लेवल is known as lift irrigation। The water for lift irrigation may be drawn from open wells or deep wells। So जो wells से पानी है या ट्यूब वेल से है वो भी एक किस्म का लिफ्ट इरिगेशन है, या लिफ्ट इरिगेशन की कैनाल्स भी होती हैं जहां पे आपका जो सोर्स है या बैराज है या रिवर है जहां से आपने इनटेक
पानी लेना है वो लोअर लेवल पे होगा, और जो एरिया आपने सैराब करना है वो अपर लेवल पे होगा या हायर एलिवेशन पे होगा। सो ऐसे एरियाज में अगर आपने पानी पहुंचाना है तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर लिफ्ट इरिगेशन। क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल वाटर। व्हेन वाटर इज स्प्रेड ओवर द सॉइल either by irrigation or by rainfall, the water is absorbed by the pores of the soil. This water is termed as soil water or soil moisture. So definitely जब आप अपने फसलों को सैराब करते हैं या जमीनों को सैराब करते हैं, उससे पानी एब्जॉर्ब होता है जमीन के अंदर। तो ऐसे पानी से जमीन का मॉइस्चर कंटेंट रेज होता है और जमीन गीली होती है, और उसके बाद आप अपनी फसल को काश्त करते हैं। तो गीलेपन को अल्टीमेटली ये कहता है कि सॉइल वाटर है या सॉइल मॉइस्चर है। फिर है टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर। इस पानी की जो जमीन में गया इसकी मुख्तलिफ टाइप्स है। नंबर 1 इज कैपिलरी वाटर। ये क्या होता है? अ पार्ट ऑफ वाटर विच एग्जिस्ट्स इन द पोरस स्पेस ऑफ द सॉइल बाय मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज नोन एज capillary water. This water is used as soil moisture for the growth of plants. So top surface of the soil जहाँ पे 9 इंच तक मैक्सिमम आपका प्लांट मॉइस्चर लेता है, तो ऐसे एरिया जहाँ पे प्लांट की जड़ें हैं या आपकी फसल की जड़ें हैं, सो उस एरिया में मौजूद वाटर को कहा जाता है कैपिलरी वाटर। फिर है ग्रेविटेशनल वाटर। अ पार्ट ऑफ वाटर विच विल मूव आउट ऑफ द सॉइल इफ प्रॉपर ड्रेनेज इज प्रोवाइडेड, इट इज नोन एज ग्रेविटेशनल वाटर और सरप्लस वाटर। तो जब कुछ पानी की मिकदार आपकी इरिगेशन नीड्स से ज्यादा होती है और आप ड्रेनेज प्रोवाइड करें, तो वो पानी आपका सेम का इलाका या जहाँ पे वाटर टेबल काफी रेज होता है वो फिर निकल जाता है और जमीन के बहाव के साथ वो उसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ मूव करेगा। तो दिस वाटर इज नॉट यूजफुल फॉर द प्लांट एज इट फ्लोज आउट रैपिडली एंड इट कैन नॉट बी एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट जोन। So third one is hydroscopic water. When an over-dried sample of soil is kept open in the atmosphere, it absorbs some amount of water. This water is known as hydroscopic water. जब आपने मट्टी का कोई सैंपल जो ओवर ड्राइड हो उसको बाहर रखा है, सो ऑटोमेटिकली वो आपके एटमॉस्फेयर से पानी को एब्जॉर्ब करेगा और उसमें थोड़ी सी नमी शामिल हो जाएगी। सो उस पानी को कहा जाता है हाइड्रोस्कोपिक वाटर। This water is known as hydroscopic water and cannot be extracted or absorbed by the root of the plant. So at this stage, the growth of the plant is stopped and ultimately the plants are dead. So then we have multiple choice questions starting from question number 1, and it is the irrigation engineering is defined as option A, the process of artificially supporting. What is irrigation? The irrigation engineering is defined as option A, the process of artificially supplying water to soil for raising crops. Option B, a science of planning and designing an efficient and economic irrigation system. Option C, the engineering controlling and harnessing the various natural sources of water by the construction of dams, canals, and finally distributing the water to agricultural field. Option D is all of the above. So we have already discussed in previous slides the irrigation engineering की जो definitions है वो ये तमाम है. So D is the correct answer. Question number 2, the irrigation is necessary in an area. Option A, where there is scarcity of water. Option B, where the rainfall is not uniform. Option C, where commercial crops require more water. So D, all of the above. So all of the above is the correct answer. Irrigation इन्हीं areas के अंदर चाहिए जहाँ पे rainfall non uniform हो, commercial crops को पानी की ज्यादा जरूरत हो और बारिशें भी कम होती हों. Question number 3, the irrigation water is said to be unsatisfactory if it contains option A, chemical toxic, option B, chemicals which react with the soil, option C, bacteria injurious to persons or animals, option D, all of the above. So D is the correct option. irrigation water में अगर ये तमाम चीजें हैं, chemical toxic हैं या chemicals हैं या ऐसे bacteria जो injurious हैं persons के लिए या animals के लिए, so that water is declared as unsatisfactory for irrigation. Number 4, sandy soil with good drainage becomes impermeable after prolonged use if it is irrigated with a water containing dash sodium. Option A 25%, option B is 50%, option C is 75%, and option D is 85%. So 85% is the correct option. Agar so sandy soil with good drainage becomes impermeable for prolonged use if the irrigated water has 85% sodium. So D is the correct answer. Number 5, for irrigation purposes,
The pH value of water should be option A between 3 to 6, option B between 6 to 8.5, option C between 8.5 to 11, and option D more than 11. So 6 to 8.5 is the correct answer. B is the correct answer. 6. Which of the salt present in water is harmful for cultivation purposes? Option A sodium carbonate, option B potassium sulfate, option C calcium sulfate, and option D none of these. So none of these salts are not harmful. Number 7. When an oven dried sample of soil is kept open in the atmosphere, it absorbs some amount of water. This water is called option A capillary water, option B gravitational water, option C hygroscopic water, option D all of these. So that is called an hygroscopic water. Hygroscopic water. D. Question number 8. A part of water which exists in the porous space of soil by molecular attraction is known as option A. So molecular attraction के लफ्ज से ही जाहिर है कि ये capillary action होगा. So that water is called capillary water. So A is the correct answer. 9. A part of water which will move out of the soil if proper drainage is provided, that is called gravitational water. So that is true. A is the correct answer. Superfluous water is also called option A capillary water, option B gravitational water, option C hygroscopic water, option D all of these. So that is जिस पानी का ज़्यादा flow होगा, so of course वो gravitational water होगा. So B is the correct answer for this. So friends, this was part 1 of irrigation engineering multiple choice questions video series जो आपके लिए स्पेशली गेट एग्जाम के लिए तैयार की गई है. इसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आपके साथ शेयर किए और फर्दर फिर हमने 10 MCQs भी आपको एक्सप्लेन किए. आई होप ये वीडियो आपको हेल्प आउट होगी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ SSC JE एग्जाम और एनी सॉर्ट ऑफ जॉब इंटरव्यू और टेस्ट. इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और CivTech सिंप्लीफाइड को जरूर सब्सक्राइब करें. तो लेट्स मीट अगेन जहां पे हम फर्दर 10 MCQs आपके लिए लाएंगे और उनको डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे.